कैरेक्टर्स वही हैं लेकिन दिखाया अलग तरह से। हाँ, जिसमें obviously because it's अनारकली is such an integral part of this whole slice of history. क्योंकि मैं अटेंशन सीकिंग बच्चा हूँ, बचपन से वही कर रहा हूँ और मुझे वही करना है। आज मेरे पास बंगला है। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, यू गाइस आर वाचिंग हिंदुस्तान और मेरा नाम है अविनाश पाल। बीती शाम रिलीज हुआ ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का ट्रेलर और उसके बाद हर जगह उसकी ही चर्चा है। क्या कुछ है इसमें और खास, इसके लिए आज मौजूद है मेरे साथ इसकी स्टार कास्ट। मेरे साथ है आदिति, ताहा एंड शुभम। गाइस स्वागत है। हाय अविनाश, थैंक यू। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कितने एक्साइटेड हुए, कितने नर्वस हो? एक्साइटेड ज्यादा हो कि नर्वस ज्यादा हो? प्लीज। खुश हूँ लेकिन नर्वस हूँ ऑब्वियसली, बट जो रिएक्शंस आ रहे हैं they're really lovely, तो हैप्पी। ठीक भाई मैं तो आई एम जस्ट मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल एंड you know, it took me almost 12 years to get a role which is completely different than what I would normally get. So not there's no nervousness as to how it is, but there is an excitement and there's just a kind of like a brotherly thing that we've all shared, you know, and I just want people to see that and see our chemistry. We miss Ashim right now. He's not here, but we love him and we hope that comes out, man. शुभम? यार gratitude, that's the only thing. जैसे एक बच्चे को PlayStation मिलता है पहली बार, जैसे वो खुश होता है, मैं वैसा ही खुश हूँ। मुझे सब कुछ मिल गया एक में। When I signed up for this character, I had no idea I'd be sitting next to them and promoting this. So for me, it's like I've got everything in my first gig that I desired for. और मुझे लगा था कि पाइप ड्रीम है, कभी शायद होगा नहीं, बट हो गया और बहुत खूबसूरत हुआ है। कल जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है इसकी ही बातें हो रही हैं। ठीक है आदिति, I'll start with you। आपका जो कैरेक्टर है वो है अनारकली, और अनारकली वर्ड सुनते ही दिलो दिमाग में जहन में जो पहला चेहरा आता है वो आता है मधुबाला। हाँ मामा, नहीं मेरे लिए तो अदिति जी का आता है। मेरा मैं पैदा नहीं होता था, बट उनको देखा है हमने। हाँ, बहुत खूबसूरत। तो वो जो एक लोगों के दिमाग में इमेज है उसको तोड़ने के लिए क्या कुछ अलग किया है और आपने कैसे खुद को इस कैरेक्टर में ढाला है? वो इमेज मुझे नहीं तोड़नी। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल image that should last in people's minds forever. Madhubala ji as Anarkali should live on forever, truly, सबके लिए। लेकिन ये एक अलग कहानी है। मुगले आजम it was a love story, और वो सलीम अकबर और अनारकली की कहानी थी। ये एक्चुअली फैमिली ड्रामा है जिसमें obviously because it's Anarkali is such an integral part of this whole slice of history and this story. तो वो सलीम और अनारकली का love etc is so much a part of this, but it's different. Also हमारे जो creators हैं वो जैसे हमारे डायरेक्टर इंग्लिश हैं from London, हमारे शो रनर रॉन स्कैपेलो, फिर हमारे जो शो रनर है विलियम, ही इज फ्रॉम LA, हमारे राइटर साइमन इज also from London, so it's a very also Ben from Bristol. Yes, our DOP is also Simon from New Zealand, Australia. He's a Kiwi. Yes. So it's kind of, we have a very diverse team. So अभी अगर वो they are looking at this story, तो जो हमारा cultural context है जो हमें बहुत प्यारा है actually, and जो ये फिल्म है मुगले आजम, it is our pride, you know, but for these guys who have made this film, this is a story about a family, so they have dealt with it as a human story. So they have not they've tried to humanize it and make it about emotions, power play, family feud, jealousy, love, betrayal, all these things, and because it's a show also, it's a very vast canvas. So I would say कि कोई किसी के शूज नहीं भर रहा, कोई ये नहीं चाह रहा कि वो मिट जाए और हम ही, नो, दैट मस्ट स्टे फॉरएवर, एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट, you know, for that cinema which still continues to inspire all of us. But this story
It's a different story. It's a different story. And we've tied up. We've done we've enjoyed doing it, and we've really like. And also, it's a different Anarkali. She can't say it, so I have to. But it's a very different Anarkali. It's a very different take. This one is very fiery, also in a way. Like, I think she's. Fiery, I think but fiery she's she generally was anyway. I guess. She मतलब should be. अनारकली इसमें apart from the love, I think it's the heart and brain behind Anarkali who मतलब this spirited girl, this fearless girl जो अकबर के सामने she took the punishment but she stood by her love. तो मतलब थोड़ा वो है एंगल. कैरेक्टर्स वही लेकिन दिखाया अलग तरह से गया है। हाँ, क्योंकि इंटरप्रिटेशन अलग है. कल जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो काफी लोग थे, बैठे थे हम लोग वहीं पे, और जब वो डायलॉग आता है ना कि ईंट हिलाने वाला, उसके बाद आपकी एंट्री होती है, यू वोंट बिलीव पीछे हम लोग 15-20 लोगों ने एवरीवन एक साथ लाइक हाय. तो वो आपका जो सीन था पहला बहुत खूबसूरत था. तहा, आपका जो कैरेक्टर है मुराद थोड़ा सा वाइल्ड दिख रहा है, तो हाउ यू लाइक put yourself in that way कि wild वाली चीज कहाँ से आई? Are you in like a real life थोड़े वैसे हो? I'm quite wild, baby. Raw. I'm raw. No. I definitely have I was definitely short-tempered as a child growing up, right? I always used to feel left out when I grew up. When I was a kid, you know, in school, in parties, when I was just in high school, I felt like I was completely left out at times. My friends, on a random occasion at one point of time, which was actually on Eid, which was, you know, and I was in Dubai, and I had to go and kind of give Sivaya to them. And for some reason, all of them just stopped replying back to my messages. And then I thought they were joking around. Any specific reason or just like that? Let's not get into that. Okay. But I found out the reason about a month later, because one guy came up to me and he said that he told me what the reason was. And it was a very silly reason, to be very honest. I really want to know maybe after the interview. Maybe after the interview. Yeah. Yes. So when all that, I just gathered all those thoughts. I gathered all the events in my life over here in Mumbai when I joined the industry, the rejections I faced or the promises that were made, and you know, I was left hanging, or things that I have actually signed on and they've completely just started off with somebody else, not even giving me an explanation. You know, so when things like this happen, you kind of get you have angst inside you. You know, you feel like, you know, मैं बदला लूँगा, like I'll revenge, and when I become something, now I don't feel. I mean, now it's okay. You know, all those things I felt, and I let go of it because my mom. रात गई बात गई. No, I mean, my mom always said that, look, you all these things are part and parcel of life. True. Right? What is in your hands? Your hand is only that you wake up in the morning and you work really hard. That's it. You find out your weaknesses and you work really hard. That's it. And she did it, and she inspires me to do it. And I guess all that thing put together is what Murad is. And that's how I got that rage in all those events. And then I just took it out in this. वो दिख रहा है. Channeled ट्रेलर it. में हमने देखा है. Channeled it. That's absolutely right. I channeled ठीक है. it. शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस. डेब्यू है. जितना देखा है बहुत कमाल लग रहा है. थैंक यू. आप इसमें दानियाल का कैरेक्टर निभा रहे हो. दानियाल मिर्जा. अलग कैरेक्टर है. बिल्कुल. हाउ यू प्रेप फॉर इट? यार रिस्क लगा कि यार मैं पहला ही कुछ ऐसा करने वाला बहुत लोग बोल रहे थे, मेरे जो दोस्त थे आसपास की मत करो, एंड पता नहीं क्यों हम 2023 में हैं और अभी भी होमोसेक्सुअलिटी को ऐसे कंसिडर किया जाता है कि वो कितना बड़ा टैबू है, आप स्टीरियोटाइप हो जाओगे, आपको वैसे ही कैरेक्टर्स मिलेंगे. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. मैं बहुत ऐसा नहीं है कि असेक्सुअलिटी हैज टू डू विद अ पर्सन. वो सिर्फ एक पार्ट होता है एक इंसान का, सब कुछ नहीं होता उसका. And to be very honest, I guess even the way they've showed him, he's so multi-dimensional, right? Yeah, Daniel. He's so multi-dimensional. He's religious. Yes, this is one part of him, but more than that, they've shown him when he completely changes. His arc is incredible in the show. And you know, that is one time when I first read the script, I'm like, dude, this guy's got a really amazing character. So many things to play with. You know, it's not just one way. It's not just I'm just religious. एक बार ज़हन में है कि यार ये कैरेक्टर मैं कर लूँ क्या? No, never. Because I wouldn't do justice to it. And I'm not as pretty as him. I need to be rough and tough.
I'm the rawness. I'm the Marlboro man. Sorted. Okay, शुभम शो कैसे मिला? Like it's a यार- debut show, तो मिला कैसे? मैंने एक्टिंग वैक्टिंग बिल्कुल करना बंद कर दिया था. मैं राइटिंग करने लग गया था. एडी रह चुका हूँ, तो डायरेक्टर बनने का भी शौक था. तो मैंने एक्टिंग से बिल्कुल अपना ताल्लुक तोड़ दिया था और कुछ ताल्लुक तोड़ दिया था बस. और बस एक दिन रैंडमली दिमाग में ख्याल आया कि मैं खुश नहीं रहूंगा यार अगर मैंने ये नहीं किया ना, क्योंकि मैं अटेंशन सीकिंग बच्चा हूँ, बचपन से वही कर रहा हूँ और मुझे वही करना है. तो मुझे था कि अब एक्टिंग को एक चांस देके देखता हूँ. और तब तक थैंकफुली डायरेक्शन और राइटिंग इतने खूबसूरत मीडियम्स हैं कि उससे तुम्हें अपना काम बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है. क्योंकि तुम्हें समझ में आने लगता है कि डायरेक्टर चाह क्या रहा है. तुम उनसे बहस नहीं करते हो, तुम उनके साथ काम करते हो और उनके आगे हाथ जोड़ के पूछते हो कि आपको क्या चाहिए, मैं वही क्या देता हूँ. चाहिए? True. तो कहीं ना कहीं वो हो गया था. और मैंने ये मेरा पहला ऑडिशन था एक्चुअली 1.5-2 साल बाद. उससे पहले मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, कुछ नहीं मिला. बट लकीली मैंने जैसे ही वापस इस बारे में सोचा, थोड़ा सा वजन घटाया अपना और ऑडिशन दिया एंड दिस जस्ट हैपेंड यार. और 2-3 राउंड्स हुए थे ऑडिशंस के. बट या आई जस्ट गॉट इट. I genuinely couldn't have asked for anything more. I really couldn't, because not just the star cast, the story, how well it's written, how every character is so nuanced. Every character has its own journey, their own arc, and it's not just the primary cast. Everyone, like we have a huge panel of actors, and everyone has their own journey, and that's how it's weaved. So I'm very grateful there. अनारकली का जो कैरेक्टर है, इट्स ऑलरेडी हिस्टोरिकल कैरेक्टर. तो उसमें अगर मैं पूछूं एक ऐसा सीन जो आपको शूट करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा हो, क्या अविनाश यार ये एक ऐसा सीन था ना जो मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, एज वेल एज बहुत एक्साइटेड थी मैं उसके लिए, वो कौन सा रहा? जो अनारकली है, हमारे मेकर्स के लिए भी दे लुक एट हर इन अ पर्टिकुलर वे कि ये एक ट्रैजिक हीरोइन है और उसकी लाइफ बहुत ही, मतलब इट्स रियली नथिंग इज इन हर फेवर. सारे जो बॉक्सेस हैं वो सारे क्रॉस हैं. but I didn't want to look at her like that, and I think that was a challenge to convert every scene. Or that can only happen in your head, and that can only happen in the way that you react to somebody. That even in a scene when nothing is going your way as a character, that you're being guarded in a wall, whatever, that you are defying whatever is happening to you and you're taking it on fearlessly. Not ki hai main bichari. So not like that. But that you are looking at the person who is trying to what's the word for it? Trying to dabaw you. You're looking at them in their face Dominate. and saying, yeah, I am not afraid to you. You do what you want. You will not kill my spirit. You will not kill my dreams. You will not kill my spirit. You will not kill my love. So that was a challenge for me as an Anarkali, to just make sure that I constantly held on to that. And the only time that Anarkali is really vulnerable and she's that little girl in love, literally, is when she's with Salim. But at all other times, I really wanted to hold on to that. तहा, आपके कैरेक्टर में ना बहुत शेड्स हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग मैंने पूछा अभी, वो कौन सा शेड रहा कि किस मूवमेंट को या किस सीन को करने में आपको लगा यार अविनाश ये था मजेदार? तो मैं मुराद, जैसे मैं कह रहा था, मुराद जो है वो बहुत ही he's a barbaric kind of character. So he's very intolerant, impatient, very spontaneous in his actions, impulsive. And now all these characteristics almost seem very negative. It makes anybody who, when I read Murad, मुझे तो ऐसा लगा कि भाई ये तो why is he behaving this way? Then I try to work on the depth of the character. If he's behaving this way, then something must have happened to him. What must have happened to him to trigger him this way, right? And then I finally realized that he is missing something deep. First of all, he doesn't have a mother. Second of all, his brothers seem to get all the love, and then the elder one gets all the respect because he's elder, right? I don't get the attention of my dad, So all my energy is to become better at proving to my father that I
deserve your love. And the whole journey is about Nasir sir, who's playing Sultan Akbar, to finally just give me a hug. So every scene, I think the most the juxtaposition of all this is that when I was not trying to play rough. I was trying to play hurt, And the toughest part was that the scene, if you're talking about, was when I had to completely break down. But there's rage, right? But then you see that there's this innocent boy inside this man, who's made himself like a beast. But inside, he's still that little soft little, that bear that, and he just needs that affection. And I think that to play that at the same time, that scene was the toughest for me. First one. Great. एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हम लोग, ठीक है? I'm going to ask some iconic dialogues from our cinema. ठीक है? यही जीतेगा भाई, यही जीतेगा भाई. ऐसा? ठीक है, देखते हैं आप लोगों को मूवी का नाम बताना है. So, do we have to put our hands up? Do we have to jump? What do we just have to answer. ये तो बहुत लाउड है यार, ये बहुत लाउड है यार. डिवाइडेड बाय ब्लड यहाँ हो जाएगा. ठीक है, पहला डायलॉग. आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस. बचपन का दीवार, बचपन का दीवार. ग्रेट. यार बड़े मुझे कर दिया यार. दीवार. आदिति. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन. Baby, you can take my voice, but you can't take my spirit. Okay, next one is This is an I Anarkali. hate tears. Anand. No. Oh shit. क्या बोला ये? पुष्पा अमर प्रेम. मूवी का नाम लेना है. अमर प्रेम. मूवी का What? ये आप सही हो. Sorry, I'm आप so सही. sorry. मैंने पहले गलत. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए. आनंद. Yeah, मैंने उल्टा कर दिया. नेक्स्ट वन इज आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ नवाखलाल. इंग्लिश. ग्रेट. तू है असली फिल्मी कीड़ा यार. प्यार में जुनून है पर दोस्ती. इतना मुश्किल. अरे बड़ा रोया हूँ. सच में बहुत रोया हूँ यार. Even I cried. ठीक है, नेक्स्ट वन इज हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. कालिया. नाइस. शोले. पागल है क्या? कालिया. ए नाम फिल्म का कालिया मुझे लगा शोले. ठीक है, नेक्स्ट वन इज तारीख पे तारीख दामिनी. मैं एक्टर्स के नाम क्यों ले रहा हूँ? आप मेरे से बोला गया था यूल में. Even I- यहाँ तो ये भी चेंज हो गया. Sunny Deol is coming in my head. हाँ, पुराना चले गए. ठीक है, नेक्स्ट और वन ये इज दबा रहा है मुझे. चीटर. नेक्स्ट वन इज थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब. सोनाक्षी. आप कैरेक्टर्स हो, एक्टर्स के नाम ले रहे हो. Even I said sorry, सोनाक्षी. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज तुमसे ना हो पाएगा. गैंग्स ऑफ वासेपुर. बेबी. Redeemed and how? इट वाज फन. Yeah. कौन जीता वैसे? Taha. One of these two. आई थिंक या One of these two. ग्रेट. Damn ठीक है, it. सो दैट वाज फन. आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से. ताज के बाद कौन कहाँ हमें दिखेगा और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? इनका तो अभी इनका तो आज आज ही ही आपने तो हुआ है. धमाका कर दिया है ऑलरेडी. हीरा मंडी का संजय सूरज सर आया ने है. किया धमाका. आया है. आप Yeah. the one you're looking is Part of the always धमाका. very beautiful. Thank तो you. incredible. हीरा मंडी और हीरा मंडी में क्या कुछ है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. नहीं, संजय सर बताएंगे. When the वो तो time is ऑलरेडी right. आज बता चुके हैं कि इवेंट में काफी कुछ. ठीक है, अच्छा उसके अलावा और कहाँ क्या कुछ? उसके अलावा जुबली with Vikramaditya Motwani. Very, I Again, a loved working periodic. on that. Yes, Again a periodic. Yes. It was a Bollywood. loved working on it. Yeah, set in the Indian. कुछ ऐसा कनेक्शन है क्या कि आपको ऐसे चुन ही रहे हैं ऐसे वो evergreen है ना, खूबसूरत रोलों देख के के लिए? लगता है ट्रांसपोर्ट हुई है कि हाँ दूसरे time इसीलिए से. आई हैं. She's not belonging to this world, bro. Yeah. Oh, True. but I really enjoy it also. And when I started acting also, it was, और हमेशा ये ख्वाहिश थी कि period, epic drama, epic romance. But to be honest, that's where you actually get to act, man. You know, इतना otherwise मजा अगर आता आप you just do normal college going stories or just ऐसे ही तफरी कर, there's no challenge. अच्छा, हिस्टोरिकल कंटेंट के साथ कहीं ना कहीं ये डर रहता है जहन में कि यार कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि बीते कुछ वक्त में अगर कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल कुछ है, कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ इस पे विवाद देखने को मिला है. The thing is कि किसी के I mean, if somebody has an issue, वो उनका issue है. It's their own personal Yeah, problem. and it happens. People misunderstand, misconstrue. लेकिन
all I will say is that मेरे experience में the people that I have worked with are people that I think we should celebrate and be really proud of. You know, they love cinema so much कि True. जो बनाते हैं, it's like it's a matter of pride for us. You know. See, not every story is But true. You know, we have our imaginations to play with, and everybody's imagination is different. And if you have controversies based on imagination, then it stands no ground. No, You but know like what I mean? people have the right to have a problem, but then maybe it like yeah, maybe sometimes it gets a little out of hand. So again, communication. I wish it could be just sorted out With nicely love. with love United with love. and understanding. Yeah, absolutely. Great. Your upcoming projects after Taj, मैं both of you. आप पहले बता दो. मैं नहीं बता सकता. मेरे पास I might have something for Amazon which is coming out. And yeah, that's all I can say for now. Okay. मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दे दो प्लीज. इसके बाद डेफिनेटली बहुत कुछ आने वाला है. जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और भाई अविनाश, मैं लिस्ट दे रहा हूँ भाई तेरे को, देख ले ये सब आ रहा है मेरा. आई लव यू यार. थैंक यू. Done. So thank you so much for all the time, love and बातचीत. Thank you. Thank you, Avinash. Thank you so much for having us. So फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही. देश विदेश की तमाम खबरों के लिए और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ. Hasta la vista. Hasta la vista. आज तक